right? So you see this diagram, right? First I'll tell you like the full form of these. Okay, so yesterday we were talking about that in the red color boxes, these services are basically running on the master server. Okay. Okay, these services that the BPDBM, right? The BPRD, NBPAM, BP JobD, BP Compact TD, NBJM. Join. Oh, Krishna left. Krishna, what happened? Your Hello? network seems. Hello. No, sir. Actually, I'm not able to see your screen. That's why I reconnect. So is it visible now? Yeah, it's visible now. Okay. Okay. So we were talking about that backup process, right? In the red color boxes indicate these services are running on the master server. Correct. Right, these are the enterprise media manager, so it means these services is also running on the master server, because by master is itself a enterprise manager server. Correct. Correct. These are Yeah. the media server services, right? So these separates are running on the media server, but those are running on the master server itself. Okay, just keep remember why I'm telling this, right? Because master server has both role, the media server and the master server. If you are using it for taking the backup or not, but by default it will, once you are installing your master server, by default it will install both role, master server and media server, both role on the master server itself. Correct. Correct. Yes. So if you are Yes. installing any master server, by default it will assign a media server role also to the master server. Right, it does not depend like you are using it for the backup or not, but these services will also running on the media server also. Okay, if you are like created your separate media server, then these services will be running on your that media server in the orange color. Okay. Okay, got it, right? So Yes. first you see in this diagram we have that the Netbackup database, the NBDB. This is called the NBDB, Netbackup database. In short form, we Okay. call it NBDB. Right. So first, actually, the first process is NBPAM. So what is this NBPAM? NBPAM is the policy, the Netbackup policy execution manager. Correct. So Yes. what happened? It connect with this BPDBM, the database manager, right? Actually, this database manager is also a services. So through this, it connect with the Netbackup database, okay, and check the what are the policies are due. Let's suppose right now it's a 8:41, and we have some jobs scheduled at a 8:42 or a 8:41. Okay, or 8:42. It check with the Netbackup database manager, right, and get the list of those policies which is due in a 1 minute or a 5 minute. Actually, it connect the so actually the thing is the so that the service is always running, right? So it's not like that it will check after the 1 second or after a 5 minute, right? The all time it will checking because the services are running, right? So when any job is due,
any job is due, the policy manager check with the BPDBM. BPDBM is basically what? It's a database manager. Okay. 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 And one thing is also here, you can see this BPRD. So BPRD is the request daemon. BPRD is the request daemon. So in this way, like if you are initiating any job manually, right? Let's suppose you want to initiate any ad hoc backup right now or any policy right now. You don't want to wait for its schedule. Correct. Okay. So we are requesting, right? We are requesting to initiate the backup right now. So this service will come in the action, Correct. So Correct. if you are initiating any backup job, then this service will be like responsible for that. If this service is not running on the master server, then you cannot initiate your backup manually. But If the if, server, yes, but if BBR, which one? BBRD service is not BBRD. running on the system master server. That time we can schedule backup. which Or not? one? This BPRD. Yes, BPRD. If BPRD service is not there in master server, that time we can. Actually, okay. The thing is, so the thing is, every service has its own role. This is only for the request daemon. If you are requesting anything, Okay. Okay. right? If you are requesting, this is actually for the policy creation, policy execution. This service will responsible for that. This NBPAM. If NBPAM is not running, then you cannot create, modify, or initiate any policy. Okay. Okay. Actually, these what happened, these services will, in the backup flow, these services will like the interact with each other. You can see there is a number 1 2 3, right? Yes. 4 5, right? Then 6, right? So it's gone in a sequentially. It goes in a sequentially. First the net backup, the policy execution manager check if any job, any policy is due. So where it will check? It will check with the net backup database manager. Okay, it got some policy, like these are the policies which is due right now or which is due in the next 5 minutes. Then it will give all these policies to the net backup job manager. This is your job manager. Correct. Then it will give all these policies to this. These policies are due or these policies are going to be run. So just take it. So this job manager, now this job manager will interact with your BP job D. BP job D, your job database, your activity monitor, where you will see your the running jobs, active jobs or failed jobs. There is an activity monitor. I'll show you what like how it looks like, right? So this is your activity monitor. It will, like once you initiate any backup, it will go to net backup job manager, or any policy is due, then the policy execution manager give all those jobs to the net backup job manager. Then job manager will show these jobs on the job database. It will give these jobs to a job database. Correct. Then job database will like shows those jobs in a queue mode or a active mode. Correct. Hello. Yes. Guys, Yes, am I sir. audible? Guys, just interact. Yes, no, you got it or you not got it. Okay.
सर एक्चुअली क्या है ना, ये जो फंडा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो फ्लो बता रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो नंबर है ना, तो यहाँ इसका फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखो, इसका फ्लो जो है, फर्स्ट ये दिख रहा है आपको, अब नेट हाँ बैकअप एनबी पैम, हाँ अब ये दिख रहा है एनबी पैम। हाँ हाँ दिख रहा तो है। दिस इज योर फर्स्ट, दी फर्स्ट मतलब यहाँ से आपका बैकअप, कोई भी बैकअप जो प्रोसेस फ्लो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, मतलब हम जब ओके, नेट बैकअप से बैकअप स्टार्ट करते हैं, मतलब वो शेड्यूलर होगा या मैन्युअल होगा, तो फर्स्ट करेक्ट वो एनबी करेक्ट, पेम पे जाएगा। वो हाँ सब, वो यही ओके। काम करेगा। जो है ना पॉलिसी एग्जीक्यूशन मैनेजर है, हाँ मतलब ये काम करेगा, अब चाहे वो कोई स्केड्यूल जॉब हो या किसी ने मैनुअल इनिशिएट की हो। ओके 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 गॉट ठीक इट। है, हाँ तो ये नेट बैकअप पॉलिसी एग्जीक्यूशन जो मैनेजर है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एडॉक जॉब और एनी स्केड्यूल जॉब। ओके ओके ठीक है, समझे। हाँ रिक्वेस्ट कोई भी एडॉक जॉब है, वो हाँ ये प्रोसेस, ये वाला बीपीआरडी प्रोसेस है, इट विल गिव दी एनी एडॉक जॉब टू दी एनबी पैम। हम्म और उसके बाद कोई भी स्केड्यूल जॉब है वो कहां से लेगा, ये डेटाबेस मैनेजर से लेगा, बीपीडीबीएम से। ओके तो नेट बैकअप पैम के पास जो है रिक्वेस्ट आपके कहां से आएगी, या तो बीपीआरडी से आएगी या फिर नेट बैकअप जॉब, ये डेटाबेस मैनेजर से आएगी। ओके करेक्ट। करेक्ट देन करेक्ट जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन मैनेजर क्या करेगा, देन ये सारी जॉब्स इट विल गिव ऑल दोज जॉब टू द जॉब मैनेजर एनबीजेएम। ओके ठीक है, हम्म ये समझो दिस इज काइंड ऑफ द सीईओ, राइट। ओके देन ओके ये हाँ मैनेजर, ये मैनेजर हम्म को दे दिया इसने, या ये बॉस है। ठीक है, हम्म। बॉस बॉस गिव ऑल दोज जॉब टू दी नेट जॉब बैकअप मैनेजर। जॉब मैनेजर। ओके नाउ जॉब मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फर्स्ट वो क्या करेगा, क्योंकि देखो जब भी आपने कोई जॉब इनिशिएट की, आपको कैसे पता चलेगा कि वो जॉब मेरी क्या हुआ उस जॉब का, आप कहीं तो देखोगे ना उस जॉब को, वो जॉब चली या नहीं चली। ओके, तो जॉब डेटा फॉर बेस दैट, की भेज हाँ जाएगी। फॉर दैट वी हैव एक्टिविटी मॉनिटर कंसोल। ओके ठीक है, जहां पे मेरी सारी जॉब्स मुझे दिखती हैं। ठीक है, जहां पे मेरी मुझे सारी जॉब्स, मेरी एक्टिव जॉब्स, रनिंग जॉब्स, फेल्ड जॉब्स, और जो सक्सेसफुली कंप्लीटेड जॉब्स, तो जितनी भी हाँ जॉब्स हैं वो मेरी जॉब्स यहाँ पे एक्टिविटी मॉनिटर पे दिखती हैं। तो फॉर ओके दैट एक्टिविटी मॉनिटर वी हैव दी बैकअप जॉब डी, दैट दी जॉब डेटाबेस। एक डेटाबेस है जहां पे ये सारी जॉब्स को मतलब इनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। करेक्ट। तो ये जॉब करेक्ट मैनेजर क्या करेगा, इस एक्टिविटी मॉनिटर पे इस जॉब को, जितनी भी जॉब्स थी उनको यहाँ पे शो कर देगा कि ये मेरी जॉब्स आ गई है एक्टिव में। ठीक है, अब एक्टिव में आने के बाद व्हाट दे नीड, अब कोई भी पॉलिसी है, अगर वो उस पे बैकअप चलना है तो पहले उसको क्या चाहिए, सबसे पहले उसको रिसोर्स चाहिए कि वो बैकअप की डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे उस बैकअप को रखेगा वो। उस बैकअप को वो उस बैकअप को वो डिस्क पे रखेगा या टेप पे रखेगा। ठीक है, तो वो डिस्क हमारे पास, वो डिस्क पे स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, या हमारे पास जो टेप है वो टेप दैट इज अवेलेबल और नॉट। ठीक है, that वो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा। देन नेट बैकअप जॉब मैनेजर कम टू दी एनबीआरबी। ओके ठीक है, एनबीआरबी इज योर रिसोर्स ब्रोकर, दिस इज योर रिसोर्स ब्रोकर। ओके राइट, ये क्या करता है, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। रिसोर्सेज इट मींस योर द डिस्क और टेप, जो भी आपके पास आपके एनवायरनमेंट में है, वट एवर यू हैव डिस्क और टेप, दैट दिस प्रोसेस विल गिव that resource to the that job, particular job. One second, huh? Yeah, I'm back. Okay, so that resource broker, what happened, like this net backup job manager
then will come to that resource broker. Okay, and it will ask like how many disk or how many tape do we have available right now for these jobs. Okay. Correct. अब रिसोर्स ब्रोकर क्या है? रिसोर्स ब्रोकर इट जस्ट जैसे क्या है ना कि ऐसे समझो, जैसे अब तुमने देखा हो जैसे वो जो है ना, पहले क्या होता था, पहले टिकट्स के ब्लैक में बिकती थी टिकट्स ब्लैक में बिकती थी ना, तो वहां पे क्या होता है, वो बंदा एक घूम रहा होता है बाहर, कोई भी एजेंट होता है, ठीक है। एजेंट क्या करता है, वहां मेन काउंटर से जो टिकट खरीद लेता है और उसके बाद जो भी लेने आता है उसको टिकट दे देता है वो। करेक्ट। तो अब एक्चुअल टिकट्स किसके पास है? एक्चुअल टिकट्स है वो मेरी आपके काउंटर पे, लेकिन यहाँ इसने कुछ टिकट्स इसने ले ली, तो ये क्या करेगा, जब नेट बैकअप जॉब मैनेजर रिसोर्स ब्रोकर के पास जाएगा कि हाँ मेरे पास 5 जॉब है, वी हैव अ 5 बैकअप पॉलिसीज दैट आर ड्यू, राइट, दैट आर एक्टिव ऑन द एक्टिविटी मॉनिटर, ठीक है, आई नीड रिसोर्सेज फॉर दैट। तो बोलेगा ठीक है, ओके लेट मी चेक। तो ये क्या करेगा, नेट बैकअप रिसोर्स ब्रोकर, इट विल कम टू दी नेट बैकअप ईएमएम डेटाबेस। दिस इज योर एंटरप्राइज मैनेजर, एंटरप्राइज मीडिया मैनेजर। So all the resources it mean your like this is your, I can say this is your resource database where you are like defining your what the resources you have. This is like you have the disk storage, or you have the tape storage, or you have the cloud storage. So whatever the storage you have, all those information is keep with this EMM database. ओके। तो नाउ जॉब डेटाबेस और ईएमएम डेटाबेस ये दोनों डिफरेंट है क्या? करेक्ट। नो एक्चुअली क्या है ना, देखो ये अभी हमने वो नेट बैकअप डेटाबेस नहीं पढ़ा, मतलब वो नेट बैकअप डेटाबेस वो पूरा एक सिंगल डेटाबेस है, बट इसमें क्या है ना, ये अब पार्टीशंस हैं कुछ, मतलब आप समझ सकते हो कि नेट बैकअप डेटाबेस का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। तो हम ये बोल सकते हैं इसका कंपोनेंट है ये जॉब डेटाबेस और ईएमएम डेटाबेस के कंपोनेंट है। करेक्ट। मतलब उस एक डेटाबेस के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे एक डेटाबेस है आपका किसी कंपनी का, वहां पे एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग स्कीमा हो गए ना वो, अलग अलग जहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन है। करेक्ट। सेम काइंड ऑफ दिस, लाइक यहाँ पे क्या है, तुम्हारी पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारी जॉब्स की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या है, तुम्हारी जो रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन है, विच द रिसोर्सेज यू हैव। करेक्ट। सो देखो एक्चुअली क्या है ना, ये सारे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो नेट बैकअप देन दिस नेट बैकअप जॉब मैनेजर कम टू एनबीआरबी रिसोर्स ब्रोकर, then it will go to NetBackup EMM database, okay, and ask to I have the 5 job that needs to be run, give me the resources for that. Okay. ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे भी ना there is a one thing also, let's suppose you have the 5 jobs, correct, उन दो so in that 5 jobs, 2 jobs that will be scheduled on a disk, okay, and another 2 job that is scheduled on a tape, okay, and another 1 job that is scheduled on a cloud, okay, right? So it will check the resources according to that policy only. Got it? got it. Right. Yes, let's suppose you have the 5 tapes, okay, and that is already engaged. You have the 5 tape drive that is already engaged. Now again you have the 2 jobs, right? So you do not have the free tapes now because your 5 tape is already engaged, right? Then it will tell this this NBRB tell to the NetBackup job manager, boss, according to your requirement, my like all the resources are busy. Once those resources, any of the resources will be free, then I will assign 1 tape drive to you. Till the time, just wait.
then this Okay. then this job will show in the queue. The status will be queue, because it's not get the resources na. Correct, it's not get the resources. So this job will show as a like this job will show in a queue on the activity monitor. Correct. Okay. Okay. So just remember these one, because like, so it's not like that, like you have initiated any job or like any policy like due, right? And if those all like all tapes or resources are busy, then your job will gone in a queue, will goes in a queue. Okay. Okay. Okay, so just remember this one. Okay, then this once like let's suppose here now these all 5 jobs like up to get the resources. Okay, these all 5 jobs are get the resources. Then it will communicate this BPCD through this BP compact TD. ओके, एक्चुअली ये वाली जो सर्विस है ना, ये सर्विस आपको उस पे दिखेगी नहीं है. ओके, नेट बैकअप के नहीं दिखेगी वो. मतलब ये वाली ना एक्चुअली इट्स ये थोड़ा ये ना प्रॉक्सी के टाइप की है. ये जस्ट क्या कर रही है, दिस इज ये सिर्फ आपके नेट बैकअप जॉब मैनेजर को जो है इसके साथ में आपके कम्युनिकेट करा रही है बीपीसीडी के साथ में. ओके. ओके. ठीक है, ये इसके साथ में कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, नाउ योर मास्टर सर्वर इज कम्युनिकेटिंग विद द मीडिया सर्वर. Now the master server, the role has done here. Now it is going to the media server. It is going to communicate with the media server to take the backup. Right? Through this BPCD, that the Netbackup job manager is connect with this with the media server. Okay. Okay. Then it will come to this BPBRM. BPBRM, what is this? This is the backup and restore manager. Actually, for taking the backup and for any restore, this job is like ये वाली job जो है, this is responsible for that. देखो एक्चुअली अभी थोड़ा सा क्या है ना, ये थोड़ा सर के ऊपर से निकलेगा. हाँ, वो निकल रहा है. वो निकल वो मुझे समझ में आ रहा है कि वो निकल रहा है, बट इसको पता है क्या, देखो ये तुम्हें सिर्फ रटना पड़ेगा. और ये पूरे वर्ड ना शॉर्ट फॉर्म है तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो रहा है वो. थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ा मे बी क्लैरिटी आ जाएगी. यहाँ तक तो इजी रहता है, यहाँ तक थोड़ा सा इजी रहता है. इसके बाद फिर ये बीपीसीडी बीपीबीआरएम, तो ये थोड़ा सा क्या है ना, ये आपको इसी तरीके से रटना पड़ेगा. ये जैसे ये है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई भी इंटरव्यूअर भी, मतलब अगर यहाँ तक भी आप बता पा रहे हो अब मास्टर वाला पार्ट, तो ही इज ओके कि हाँ यार ठीक है आपको आता है. ओके. मेन क्या है ना, एज अ नेट बैकअप एडमिन और एज अ लाइक L1 और L2 रिसोर्स, यू जस्ट नीड टू नो what kind of the services are running on the master server, on the media server. तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि मास्टर सर्वर पे अच्छा बीपीआरडी चलती है, ओके, बीपीडीबीएम चलती है, ओके, एनबीपैम चलती है, ओके, बीपी जॉबडी चलती है, ओके. तो ये सर्विसेज अगर चल रही हैं, दैट मींस योर मास्टर सर्वर इज रनिंग फाइन. अगर इनमें से कोई भी सर्विस ब्रेक हो जाती है, इनमें से कोई भी सर्विस स्टॉप हो जाती है, देन योर एंटायर दैट द बैकअप
the process flow will impacted. अगर कोई भी जॉब, लेट सपोज योर बीपी जॉब इज नॉट रनिंग, तो क्या होगा, ये नेट बैकअप जॉब मैनेजर से कोई भी जॉब आएगी वो यहाँ पे आपको शो नहीं होगी, उसका स्टेटस ही नहीं पता चलेगा आपको कि वो क्या हुआ उसके साथ में, वो चल रही है नहीं चल रही है। ओके। ठीक है, लेकिन वो बैक एंड में ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी जॉब जो है अभी एक्टिव है या रनिंग है या सक्सेसफुल हो गई है। इसकी वजह से कोई ये यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब कि अगर लेट सपोज वो यहाँ पे गया रिसोर्स ब्रोकर के पास गया, ठीक है, और रिसोर्स ब्रोकर से उसको रिसोर्सेज मिल गए, उसके बाद वो आगे जाएगा, और वो ये अगर ये वाली सर्विस नहीं चल रही तो वो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर ये सर्विस नहीं चल रही रिसोर्स ब्रोकर, तो फिर ये यहीं अटक जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये वाली सर्विस क्या है, ये सर्विस ही रिसोर्स देगी, और ये नहीं चलेगी तो फिर यहाँ से आगे ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा ये। तो ये थोड़ा सा डिपेंडेंसी भी हमें ऐसे समझनी पड़ेगी। दिस बैकअप जो जॉब डेटाबेस है, दिस इज फॉर ओनली शोइंग द स्टेटस ऑफ योर जॉब। ये सिर्फ स्टेटस शो कर रहा है, ये इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहा है ये। बट दीज आर दी मेन रिसोर्सेज, ये एलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज, दिस इज एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, दिस इज योर एंटरप्राइज मीडिया मैनेजर डेटाबेस, ऑल द इंफॉर्मेशन इज हियर फॉर द रिसोर्सेज। अगर ये सर्विस नहीं चल रही देन ये किससे बात करेगा ये चेक करने के लिए कि मेरे पास क्या अभी अवेलेबल है या नहीं है। करेक्ट। तो मीडिया सर्वर पे ये सर्विसेज चलेंगी बीपीबीआरएम, देन ये बीपीसीडी ये बीपीबीआरएम के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो है, जो ये बीपीसीडी है एंड बीपीबीकेआर, ठीक है, ये एक्चुअल क्या है, ये आपका क्लाइंट पे है। तो जब ये एक्चुअली क्या है, देखो ये मीडिया सर्वर भी क्या करेगा, मीडिया सर्वर हैज आल्सो नीड टू कनेक्ट विथ योर क्लाइंट सर्वर टू टेक द बैकअप। करेक्ट। सो मीडिया सर्वर ये आपके क्लाइंट के साथ में कौन सा प्रोसेस कनेक्शन बना रहा है, सो दिस इज योर बीपीबीआरएम। ओके। If BPBRM is not running on the on the media server, then it will not able to connect to your client. Basically, this is for responsible for connecting to your the client, right? और ये किसके साथ में कनेक्शन बनाता है, that BPCD. This is your आपके communication daemon on the client. Here also you can see this is your BPCD. So BPCD क्या है? BPCD actually is the आपकी communication daemon that is so it will responsible for create the connection between the media server or master server to the client. Okay. Here also you can see your master server is connecting to media server through this BPCD daemon. Right, here also you can see your media server is connecting to the client through this BPCD. Okay. Yeah. In the last this is the BPKR. So BPKR is actually for taking the backup on the client. एक्चुअली देखो होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी लेट्स सपोज यू हैव द यूनिक्स क्लाइंट और यू हैव द विंडोज, ठीक है, तो नेट बैकअप क्या करता है, बेसिकली इट विल यूज दैट द क्लाइंट द सर्विसेज फॉर टेकिंग फॉर एक्चुअली देखो जब क्या होता क्या है ना, जब बैकअप हम लेते हैं, वन सेकेंड लेट मी ठीक है, लेट सपोज दिस इज योर क्लाइंट। ओके, अब ये मेरा लेट सपोज ये मेरा है विंडोज का क्लाइंट और मुझे इसका लेना है सी ड्राइव का बैकअप। सो सी ड्राइव का बैकअप क्या होगा कि अगर आप
तो अगर वैसे बैकअप लेना है, मतलब if you want to take the backup through your Windows utility, करेक्ट। सो वहां पे ना Yes. विंडोज में भी फीचर होता है फॉर टेकिंग द बैकअप, करेक्ट। तो ये जो क्लाइंट, जब हम नेट बैकअप इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या है, BPBKR, ये वाला Okay. प्रोसेस क्या, वो विंडोज वाली यूटिलिटी जो है जो बैकअप के लिए लेती है उसके साथ में कनेक्शन बनाता है, और जो आपको आपके क्लाइंट से जो डेटा लेके जाना है, जो क्लाइंट से डेटा लेके जाना है, वो ये प्रोसेस लेके जाएगा मीडिया सर्वर पे। जो ये प्रोसेस है BPBKR, इफ दिस इज ऑल्सो नॉट रनिंग देन योर बैकअप विल नॉट स्टार्टेड। मतलब यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा, आपका ये आपके कनेक्शन तो बन जाएगा, आपका मीडिया सर्वर, योर मीडिया सर्वर इज एबल टू कनेक्ट विथ योर क्लाइंट, but once it will start the backup, it will not take the backup because this process is not running. So for Okay. once the connection is happened, once the connection is created, then this process will start to take the backup, or to transfer the data, correct? If Yes, your correct. media server has that the tape or disk, if your media server has the tape, then there are some more process also running. This BPTM, this is your tape manager, right? LTID and TLDCD and TLDDCD. Actually, these processes are the आपके robot process. Okay. Correct. We talk about, we already talk about when we discuss about that library, right? So your library has one robot. Okay, there So are all services basically, running on a media server. Is it? correct. So this, if these services are because these services are handling that library robot. Okay. I told you na, like that the library has the robot also, Yes, and yes. right, and that is if so that we are calling, we are calling that as a TLD library, if that your robot is managed by the net backup, right? So how it is managing, some of the processes are running on the media server to handle that robot. This LTID is basically for communicating with the library, and this TLDCD and TLDDCD, this is your the robot handling. If any once if your backup goes to the tape, right, and it requesting for the media, then this TLDCD is responsible for putting the media in the drive. Then once the backup is completed, then just pull back that media to the slot. If this process is not running, then your media server is not able to take the backup on the tape drive. Okay. Okay. ठीक है, सिंपल है यार। देखो इतना इसमें कुछ कंफ्यूजिंग का कुछ नहीं है, बस ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये तुम्हें ये समझो कि ये रटना पड़ेगा। दिस इज योर नेट बैकअप डेटाबेस। Database has all the information related to your policies and all things, right? This is your the net backup PAM, the policy execution manager. So policy execution, the this policy execution manager is check with the BPDBM if any jobs are due, right? Or we have any ad hoc job, then it will check with this BPRD of the request demand. Once it get the list of that jobs that are due, right, then it will give all those job to this net backup job manager, right? Then
once like it will give that jobs to the job manager, then it will give that job to the BP job D. Job D, it means your job database manager. Job database manager, Okay. what it will do, it will show your jobs on the activity monitor as a queue or as a waiting for the resources, right? Right. Then again it will come to the Netbackup job manager and asking for, okay, now the job is showing on the activity monitor, I need the resources. Then it will come to Netbackup resource broker. Then resource broker check with the Netbackup enterprise media manager, like if we have the resources available or not for this job. After the allocating the resources, it will communicate with the media server through this BPCD. Right? Then BPCD communicate with the BPBRM. Okay. Then it Okay. will communicate with your client server through this BPCD. And BPCD is communicate with the BPBKR to start the backup. Okay. This service is basically like responsible for creating the connection between the media server. Right here also you can see this is the like responsible for like creating a connection between the master and media server, correct, through this Netbackup job manager through this so this is connecting through this the BPCD. Correct. Okay. Yes. उसके बाद once ये फिर रिटर्न में भी जाता है, once this job is completed, then this Netbackup like Job manager. yes, the आपकी job manager, sorry, right, this Netbackup job manager को ये बोलता है it will like this job is completed, then this job manager communicate with this the आपके backup job database. Okay. Correct, and it will change the status from running to completed. Okay. Or done. Okay. Right, because your job is done now. Yes. 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 While going back, it will directly goes to NBJM. After that, job manager, job DB. Correct. Correct. Okay. Because actually the thing is na, your आपके communication is already established na. Yes. Right, this is already established. So this once this job is completed, your data like your data backup is completed, then the same way it like it is. So actually it's going like this only. Actually it's going like this only. This service not interact with this one. It send the communication like this. Then so once this Netbackup job manager get the information like this job is completed, then it will change the status here, and it will release the resources and get back give back that resources to NBRB. Then it will inform to Netbackup enterprise media manager like, okay, this job is completed, just release this like resource. Of resource I mean tape or disk. Because actually here once this Netbackup enterprise manager allocate any job, right? So here यहाँ पे एक एंट्री है ना, लाइक मैंने ये वाली टेप और ये वाली डिस्क मैंने इस जॉब को असाइन की है, जब तक वो रिलीज की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक उसके पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये जॉब यहाँ, ये रिसोर्स मेरा यहाँ पे अभी है, ये मेरा रिसोर्स अभी यहाँ पे मेरा किसी जॉब पे काम कर रहा है, जब तक वो रिलीजिंग यहाँ से रिलीज नहीं होगा. क्योंकि क्या हुआ कि समटाइम क्या होता है, समटाइम मतलब ये कोई भी जॉब डन हुई, देन नेटबैकअप जॉब मैनेजर इज लाइक ये प्रोसेस नहीं चल रहा है, एंड दिस इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद एनबीआरबी
to give the information this job is done and now we need to release this resource. तो ये इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है, तो क्या होगा कि तुम्हें वहां पे दिखेगा कि तुम्हारे कोई भी जॉब रनिंग में नहीं है, बट नई जॉब जो है वो क्यूड में आ रही है। मतलब अगर मेरे कोई बैकअप चल रहे हैं, रनिंग में है, इट मींस वो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। बट अगर वो कोई भी जॉब रनिंग में नहीं है, मतलब मेरे सारे रिसोर्सेज फ्री हैं बट स्टिल माय जॉब इज इन अ क्यू स्टेट, it means that NetBackup Enterprise Media Manager database is not updated. राइट वो प्रीवियस वाला जो एलोकेशन जो की थी उसने, वो एलोकेशन अभी भी है यहाँ पे, वो एलोकेशन रिलीज नहीं हुई है। तो इन दैट केस मतलब ये थोड़े से ना ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं। जब मास्टर सर्वर पे इस टाइप के इश्यूज तुम फेस करोगे ना, तो ये प्रोसेस ध्यान रखना, मतलब ये प्रोसेस तुम्हें बहुत हेल्प करेगा ट्रबल शूटिंग में। ये प्रोसेस बहुत हेल्प करेगा तुम्हें ट्रबल शूटिंग में। कोई भी जॉब या कोई भी एरर अगर आएगा ना, तो तुम इजीली उस जॉब के प्रोसेस से, उस जॉब के फ्लो से तुम समझ जाओगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके। और ये जो सर्विसेज है ना, जो आप जो बोल रहे हैं, जितने सारे ये सर्विसेज है ना फ्लो, उसके अलग अलग सर्विसेज ये होंगे ना? सर्विसेज है, हाँ ये सर्विसेज है सारी है। ओके ओके, ये सारी सर्विसेज है। ये टोटल कितने सर्विसेज होते हैं मास्टर सर्वर पे? यार यही है बस जो ये दिख रही है। एक्चुअली अभी तो कुछ और भी चेंज हो गई हैं, अभी कुछ और भी चेंज हो गई हैं, बिकॉज सम ऑफ दी like that token is also introduced, and the web services, that your web console is also introduced, because this is that old one, actually new वाला मेरे को कहीं वो डॉक्यूमेंट मिला नहीं, right? I'll check that one also, but this is like अगर ये समझ लिया आपने then it's fine, मतलब जो है ये आगे कोई उसमें कोई भी नहीं पूछता हुआ। Earlier there was only Java based console, no? Yes, correct. Earlier there is only the Java based console, but now they introduce the web console also. So for web console and that web console is like for the web console services also like introduced the NB Web SVC. Okay. Right. I'll show you all that services on my production master server, or we will install one. Actually, I have created that this VMware and I have installed one this Linux machine. I just downloaded one Windows also. So, okay, then we are going to install Netbackup on the Linux server. Yes. Actually, we'll install on the Linux also and masters. So on the Windows also. Actually, I install one Windows also. Okay. But if we install on Linux server, then how we can access a Java based console? Okay. So actually the Java, like there is a utility, right? You can install that Java utility to any of the server. Through that server, you can access, you can open the Netbackup Java console. Okay, got it. Right? Actually Java console is just a utility. Okay, you just install on any of the server or any or like on your laptop, then directly you can access your the master server. Correct? Yes. And as per my information, most of the enterprises level offices, they are using master server on installing master server on Linux server, and media server on Linux server, and master server on Windows. Correct. Yeah, actually, if you are talking if you are asking to me like what I'm going to suggest, I'll suggest the Linux one. For both, because Linux, master and media. Yes, the master and media both on the Linux server, because the Linux server, like it's a very it's a simple. Yes, simple or secure, but for management, it will be little bit difficult, na? No. For management also, it's a simple. Okay. In Windows, actually, there are the lots of things. Okay, let me tell you one the simple thing in the Windows, right?
So in most of the environment, because that RDP connection require the license. Yes, correct. Yes, correct. The RDP connection require the license, correct? So at a time only 2%. So by default, I believe there are 2 connections are allowed only, right? Let's Yes. suppose in your team you have the 5% or a 10%. So only 2% can allow that Windows master server. Mhm. Like, okay, so actually then only 2% can access your master server. Okay, but if you have your the Linux master server, then through putty any of the session you can, like any number of session you can like open. Correct. And actually the net backup, most of the net backup things you can run do from the commands only. But in Java, like it's very slow. Sometime it's hang. Sometime, right, the lots of things. Actually mine, in my entire career, I prefer the Linux only. So actually in this latest one, in the current account, one of my account, the master was running on the Windows, and other 2 is running on the Linux one. Okay. Right. So actually Windows one has the lots of the things, but I prefer the Linux one, because Linux one, actually I love to work on the commands only. So if you want to do anything, you just run the command. Simple. You do not need to like click and do. So just run the command and wait. But Your task will be done. to remember the command is difficult, na? There are multiple commands. So. Yeah, actually it's not the once you regular practice that, right, then that all the command will be, so you remember that all the commands. ओके, सो इसको एक बार फिर भी पढ़ लेना, ठीक है? मतलब इसको, ये जो नीचे प्रोसेस है ना, ये सब 1 2 3 4 5 स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स पढ़ लेना, और इनको कोशिश ये करना कि ये रट लेना, मतलब ये रटे होने चाहिए तुम्हें। ये क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी समझना तो छोड़ दो, बट ये रटा होना चाहिए कौन सा प्रोसेस किसके साथ कम्युनिकेट करता है और उस कौन सा नंबर है उसका। ओके, जस्ट आपसे इसको याद कर लो, कैसे भी करके कुछ भी करो, बस ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, ठीक है? अभी हम कुछ कुछ टर्म्स हैं बैकअप की, पर वो देख लेते हैं, क्योंकि आगे वो टर्म्स की अब जरूरत पड़ने वाली है। लाइक अब बैकअप वी ऑलरेडी नोज। यस, रिस्टोर, व्हाट इज रिस्टोर? कैन anyone tell? हेमंत, कृष्णा? yeah. Restore is the process of retrieve data which we have taken backup. Right. So whenever we required for, so we retrieve the data from the destination of this process, we call the restore. Correct. Okay. Okay. So restore is simple. It's not like whenever we need the data, we just recall that or retrieve that data. So like it can be on a tape or disk. Okay. Now duplication. What is duplication? Deduplication you are asking. No, not deduplication. Only duplication. Deduplication is a different thing.
Deduplication is different thing. Duplication is a different thing. Okay. I heard about a deduplication, but I haven't heard about the duplication in backup. Okay. Actually, duplication, or you can, I'll just remove this. 1 second. I'll just remove this one. Okay. Now, Same files. right? Duplicate. So we are creating the another copy of your backup. We are creating the another copy of your backup. Your backup was on a D1 on a disk. Now you are creating one more copy or data to the tape. Okay. Okay. Correct. Yes. So now you have the data on the disk and tape. Your primary, So secondary, or tertiary. Primary, yeah, the on primary disk, or secondary. secondary on Yeah, tape. yeah. If we have third copy on cloud or anything, air gap. Correct. Yeah, so you can understand like this way also. Your primary copy is on a disk and secondary copy on the tape. Yes. Correct. Now, if let's suppose this is like this is crashed or it has some issue, so you can retrieve your data from tape as well. Correct. Most of the environment you will get this kind of the scenario. They are not like relying on the one storage. They are the primary copy they are dumping on a disk and secondary copy on the tape. Right, and tape is also not on the on side. Regularly they are moving the tape from off side. Off side means to the another location. It can be some of the accounts they are sending their tapes to bank in the vault, the bank lockers. Correct. Once this data is moved to tape, then this tape is like move from the on side to off side. The off side location will be the another data center or any bank or any another safe location where in case of disaster of this location we can retrieve the data from here. राइट, बिकॉज अगर दोनों कॉपी अगर हम एक ही जगह रख रहे हैं तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना, अगर दोनों कॉपी मेरी सेम डेटा सेंटर के अंदर हैं तो। करेक्ट। अब so that's why they are moving the another copy, the secondary copy to the another location. Yes. So this is we call the duplicate or duplication. Okay. कुछ नोट्स वोट्स बनाते हो तुम लोग, नहीं बनाते हो, या सिर्फ ये वीडियो पे रिलायबल हो? हाँ नोट्स मीटिंग्स यार, नोट्स थोड़ा बनाया करो भाई, या फिर बाद में वीडियो देख के बना लिया करो, इस टाइम पे नहीं, बट बाद में थोड़ा सा लिखोगे ना तो देन इट विल इजी टू लर्न। अगर लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मतलब अगर लिखोगे ना एक बार तो याद हो जाएगा जल्दी। करेक्ट। ठीक है। नाउ रेप्लिकेशन। व्हाट इज दिस? Replica of the backup job. Replication is basically, this is site A to site B. If you are transferring your data, master server is Delhi and another master server is Mumbai, right? So here you create
you create the connection from this master to this master. So whatever the data, whatever the client is here, you are replicating all that data to the Mumbai location, and whatever the data or client is here, you are replicating this to this one. These all are replica to each other. Let's suppose your this side is goes down, or this side has an like any the disaster, earthquake. You have all the backup is here in B side. For this all the critical backup, whatever the backup is taking this master server, we are transferring this data to this side B. So अगर यहाँ पे कुछ भी होता है, we have the data here, we can recover all this data from here to here. Yeah. Correct. So this process we call replication. Clear guys? ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा तो इसमें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी. प्रैक्टिकल बताओगे आप? प्रैक्टिकली होगा, डोंट वरी यार, प्रैक्टिकली सब होगा. प्रैक्टिकली इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग, ये सब रेप्लिकेशन, डीडुप्लीकेशन, ऑटोमेटिक इमेज रेप्लिकेशन, प्रैक्टिकल सब कुछ होगा. देखो अगर तुम चाहते हो कि हम प्रैक्टिकली सब कुछ करें तो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं. प्रैक्टिकल करना फिर क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो एक्चुअली होगा क्या, जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना तो इंटरव्यू में वो आपसे प्रैक्टिकल नहीं कराएगा भाई. किसी भी इंटरव्यू में जाओगे वो ये थोड़ी बोलेगा कि ये मास्टर सर्वर है, इस पर एप्लीकेशन करके दिखाओ. इंटरव्यू में तो आपको इंटरव्यू सिर्फ आपके क्रैक ही करना है, वहां पे आपको बताना पड़ेगा प्रोसेस, है ना. वहां पे तो आपको बताना ही पड़ेगा ना प्रोसेस कि हाँ दिस इज, ये ऐसे ऐसे होता है. वी आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम ए साइड टू बी साइड, अब दैट इज वी कॉल द एप्लीकेशन. ठीक है. अब आप उसको बोलोगे कि नहीं यार ऐसा है, मैंने मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा बट मैं जानता हूँ कैसे करना है, तो क्या बोलेगा वो? ठीक है. तो हम वो भी प्रैक्टिकल भी करेंगे, डोंट वरी. ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं हो, क्योंकि एक बार प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे ना तो फिर ये थ्योरी वाले के लिए सब बंद हो जाएगा. ये तो अभी थोड़ा सा ये वर्ड्स, क्योंकि वहां पे क्या होगा ना, जब वहां पे वो वर्ड्स देखोगे ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे यार इसका मतलब क्या है ना. तो एटलीस्ट अभी यू नोस कि ये हम इसमें देख लेंगे कि इसका मतलब अच्छा ये है, तो वहां प्रैक्टिकल में थोड़ा इजी रहेगा समझने में कि अच्छा ठीक है रेप्लिकेशन, हम यहाँ पे ये रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे हम रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे. राइट. इंपोर्ट, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपोर्ट है ना, ये तुम्हारा ये रेप्लिकेशन में बहुत, मतलब ये इंपोर्ट रेप्लिकेशन में ना इंपोर्ट बहुत काम आता है. अब रेप्लिकेशन इसके बिना नहीं चलेगा. तो सबसे पहले हम इंपोर्ट समझते हैं. व्हाट इज द इंपोर्ट? ओके, लेट्स सपोज you have site A and you have site B. Okay, so right now there is a no connection between this. This is the separate master server and this is the separate master server. Okay, now you have one client here. Let's suppose this is your DB server and you have taken this backup on the tape. Correct. So the process क्या होता है? Now the अभी process क्या होता है? Now the process is you take the backup for this client
on the tape. So your data is stored here on the tape. Your all the data, your backup is stored here, and related to that information is stored here on the master server DB. Correct. इस Yes. क्लाइंट का मैंने जो भी बैकअप लिया है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, वो मास्टर सर्वर पे, बट एक्चुअल डेटा कहाँ पे है? एक्चुअल डेटा तो टेप पे है ना. Yes, yes. Actual data is on tape, but for that data the information, that metadata or indexing is the indexing. So indexing is where it's on a master server. Must. Correct. Now you want to restore this data in a site B. This is my Delhi location, and there was a one application is running over there. I just want to restore this application to Mumbai. Okay. I have taken the backup from Delhi, right? Now send this tape to this location. Correct. Yes. Yes, sir. For But this, how connectivity would be established? yeah. That's why I'm telling now what this process is called, import. Actually, there is a no connection now is here. There is a no connection. Right now, I want to restore it. So I'll send this tape to site B. Actual data is where? Actual data is on a tape. हमने backup, we take the backup on tape. Now only that metadata or only that information is with the master server, but actual data is where? Actual data is on a tape. Yes. Correct. I send this tape to site B. Okay. Correct. Now I need all that information, this metadata information. I need that metadata information in this site B master server so I can restore. Okay. Correct. Because this once I go to the restore, I need to check like what is the backup inside this tape. Okay. But I do not have that information. Okay. Then we have to move metadata also on side B. Yes, correct. But this is not like that. We do not need to move the metadata. Okay. Right. What the process is, we run the import process on this tape. Okay. Actually, the thing is, once we take the backup, so one information is stored on this tape header also, the tape header. So that that metadata information is stored in the tape header also. So what we do, we will run the import process. So import process will read the header of this tape. Right. Okay. Read the header of this tape and create the information entry in this master server. Okay. Now you have the information, what is the data inside this tape, for which client the data inside this tape, for which like which source, like C drive or D drive, whatever the information you have, you will get that information here after running this import on the tape. We no need to move tape to side B. Is it? No. Tape is needed. Okay. Tape is needed. Okay. Tape is needed. Correct. Okay. Tape is needed, but after moving this tape, you need to run the import on the tape. Then after running this import, it will create or it will generate the this backup information in this master server. Right. So once it generated, then easily you can restore, because for this master server this tape is new. Correct. This tape is new, na?
because this tape information is not like this tape information is not here. So Yes. for this server, this tape is new, right? So for reading the data from this tape, we need to run the import process. Okay. Correct. Correct. We want to move. We want to move the data from site A to site B. If the data is on a tape, we need to move this tape to site B and run the import process to generate the database or to generate the entries, that is like what backup is there on this tape. Okay. एक्चुअल Okay, में sir. ये समझो, जस्ट मोटा मोटा ये समझो कि इस टेप के ऊपर डेटा क्या है वो हमें जानना है, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट प्रोसेस चलाना पड़ेगा। जैसे क्या है कि अगर किसी पेन ड्राइव में कोई डेटा है तो पेन ड्राइव को प्लग करके ओपन करना पड़ेगा ना। Yes. अगर उसको लैपटॉप पे प्लग करोगे ना, देन उसको वहां पे जो फोल्डर्स में जाके ओपन करोगे तभी पता चलेगा उसके अंदर डेटा क्या है। करेक्ट। सेम प्रोसेस इसके लिए, इस टेप को हमें टेप ड्राइव में डाल के और इंपोर्ट चलाना पड़ेगा, जिससे कि वो टेप ड्राइव रीड करेगी इस टेप के ऊपर क्या डेटा है। तो दैट प्रोसेस वी कॉल्ड इंपोर्ट। सिंपल। Okay, okay. Sir, but what about the disk library? If our primary data on a disk library, in that case, what will happen? How we can import or how we can restore the data? इसको कैसे भेजोगे? No, no. Suppose हमारा जो प्राइमरी जो डेटा है ना, हमने यहाँ पे देखा है कि टेप पे है, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ टेप अगर वहां पे हमारा डिस्क होता तो हमें भी ठीक है। डिस्क भी मूव करना पड़ता। नहीं, डिस्क नहीं मूव करना पड़ता। ठीक है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर इफ देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन साइट ए हाँ एंड साइट बी, हाँ right, there is a no connection. correct. In that case we needed tape only, because tape Okay. is a secure, क्योंकि देखो actually अब the customer data is also critical, Correct. right? If you are sending any disk, then anybody कहीं रास्ते में वो tape, अब जो डिस्क है उस डिस्क को अगर किसी ने क्या किया अपने लैपटॉप पे लगा के, कहीं भी लगा के उसमें से डेटा रीड कर सकता है। सिक्योरिटी Correct. कहाँ रही फिर? ठीक है। सो टेप में क्या होता है कि टेप में वो सिक्योर होता है, वो सिर्फ वहीं पे जाके रीड कर सकता है। मतलब व्हेनेवर वी हैव दैट नेट बैकअप मास्टर सर्वर, बट टेप मतलब अगर रास्ते में कोई चाहे तो टेप से भी डेटा, अब लाइक ही कैन ऑल्सो रीड द डेटा फ्रॉम टेप, बिकॉज टेप वो सिर्फ हमें इंपोर्ट चलाना है। ठीक है। बट क्या अगर देखो क्या है कि अगर कोई तुम डिस्क भेज रहे हो, मतलब डेटा या डिस्क पे, क्योंकि होगा क्या, मतलब कोई भी डिस्क है तो डिस्क वो उस पे डिस्क पे लगा के उसे डेटा आपको लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये ऐसा होता नहीं है जनरली इन्वायरमेंट में। अगर हमें कोई डेटा अगर कहीं भेजना है तो वो टेप के थ्रू ही जाता है, डिस्क के थ्रू नहीं जाता। ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गया कि इफ देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन दीज मास्टर सर्वर्स। ठीक है। अब आपके वाले प्रोसेस में बात कर लेते हैं कि अगर टेप है तो, मतलब अगर क्या नाम है, अगर डिस्क को भेजना चाहे तो एक्चुअल होता क्या है कि अब क्या, ये एक्चुअल पहले होता था ऐसे, बट अभी क्या होता है कि वी हैव अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू साइट्स। करेक्ट। यहाँ पे कनेक्शन है हमारे पास ओवर दी वैन, ओवर दी वैन। ठीक है। नाउ ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बैकअप लिया। ठीक है। नाउ आई वांट टू जो वो डेटा है, आई वांट टू रिस्टोर दैट डेटा इन दिस साइट। आई विल यूज दिस रेप्लिकेशन। एक्चुअली रेप्लिकेशन ना पहले बता दिया, पहले इंपोर्ट बताना था मुझे। आई विल यूज दिस रेप्लिकेशन to transfer this data to here. Okay.
एक्चुअली टेप भी हम क्या कर रहे हैं, टेप भी तो ट्रांसफर ही कर रहे हैं ना फ्रॉम साइट ए टू साइट बी, Yes, yes. right? Here also what I'll do, I'll configure the replication job. So replication job, what it will do, it will transfer the backup data to this site B, correct? But यहाँ पे Yes. भी होगा क्या, एक्चुअली देखो, for this also actually this backup is taken here. अब मेरा ये वाले मास्टर सर्वर से बैकअप लिया है, अब मैंने बैकअप, अब अगर इसको वैसे ही समझो, लाइक ये समझो ये डेटा टेप पे जा रहा है, तो टेप पे जा रहा है, इसको रीड करना पड़ेगा, करेक्ट? बट अभी हुआ क्या, फॉर अब लाइक बाय दिस रेप्लिकेशन जॉब आई ट्रांसफर ऑल दिस बैकअप डेटा टू हियर. Now on the disk also I need to run the import. After transferring this data here, there will be a import process will be running, then it will create the entry in the site B master server or site B database. अब बैकअप, उसके बाद replication, then import. Import will create this this backup information. ये समझ में आया नहीं आया या कुछ Yes, sir. इसमें Yes. देखो, अगर नहीं हो, Yes, sir. देखो एक्चुअल में ना सेम प्रोसेस है, जैसा अगर इसको अगर आपके कोरिलेट करोगे ना क्या टेप के साथ में, इसको टेप की तरह ही समझो. just try to understand like the tape. If you have the tape, you take the backup here, then transfer the tape, then run the import. Okay. Correct? Now there is a connection between these two master servers. You take the backup here, you transfer the data over the WAN. Right now the data of your data is reached here. Now you need to run the import process to gather the information, like what is the data in like what is the which client or what is the backup selection in this backup image. For running this import job, it will create the information in this master server, in this database. देखो इंपोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, इंपोर्ट जस्ट क्या कर रहा है, जो भी मेरे पास बैकअप आया है, जो भी मेरे पास टेप है, उसे रीड करके उसकी एंट्री कर रहा है इसके अंदर. इट विल क्रिएट द एंट्री इन दिस डेटाबेस. गॉट इट? Yes. Yes, sir. हेमंत, Yes, sir. हेमंत नहीं समझ में आया तो पूछ लेना यार. एक्चुअली देखो ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया. तो अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये है कि समझ में आ No, जाना sir. I चाहिए. can understand. I can understand. ओके 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 गुड, ठीक है. We read backup, restore, duplication, import. Okay. Now we talk about that of the deduplication. You are asking that, huh? You are telling that deduplication. Okay, Krishna, tell me what is deduplication. Deduplication, it is a process of eliminating same data, redundant data, or store same, remove same data, or store only unique data. Correct. Hemant, got you? Yes, yes. Right. Let's suppose you have some data. So some data, it means like you already taken the full backup. Correct. You already taken that backup. Now after running, if you enable this deduplication feature,
Okay, and this deduplication, the one thing, it works only on the MSDP. I'll tell you later this word, and it require a license. Okay, it require a license, and this MSDP is media server deduplication pool. This deduplication feature is enabled on this only if you have this license and you configure this MSDP. If you configure this MSDP media server, then only you can use this deduplication. And what is this the deduplication? Deduplication is allowed to store only unique data. Right? Let's suppose you have one machine, and in that machine you have a C drive and D drive. Correct. So on a daily basis in C drive, the most of file is not changed, like program files, because you are not installing the application on a daily basis. Correct. In C drive there is a folder na program files and Windows. So there is a no change in these two directories on a daily basis. Why? Because you are not you are not installing any application on a daily basis, and you are not patching your window on a daily basis. Correct. So Yes. where your data is changing, or where where we have the different kind of the data. And the one more thing also, actually it works on the block level. The deduplication, it works on the block level. So what is this block level? Block level means While taking a backup, it will create a block of same length. actually while taking the backup, it's break your data in the block level, in the blocks. Correct, correct. Right? Because on the hard disk, if you go in the hard disk, the hardware architecture, it is store the data in the blocks on the hard disk, right? So it breaks your data in the blocks. So once, so after, so in the next backup, it will match these blocks. In the next backup, if these blocks are same, then it will not take this backup. It will just create an entry like, okay, so in the second backup it just create the entry and match these entries with these blocks. So you can, in the second backup also, you can use these blocks for the restoration. Okay. Right? So what happened? You will get more size, because you are not like taking the daily backups. You are just your media server just matching the blocks. Let's suppose on the Monday you taken a 10 GB, right? On Tuesday it's also like these are the same blocks. It will take the 0 GB. But on the backup job, it will show you like so it has taken a 10 GB, but actual on the media server, it will not store any, it will not take any other size. So don't confuse here. Incremental is a different thing. Deduplication is a different thing. Incremental is on the file level. Incremental is on the file level. If there is any change in the file, then it will take those covers. But this is on the block level. This is on the hardware. This is on the hard drive level. It's not the file level. Okay, incremental works on the file level and deduplication works on the block level. Eamon, got? Yes, sir.
incremental works on the file level because File level. you are working on the files. In the system, you are working on the files, correct? And you are changing or you are updating the files. But it is not actually, it's not working on the files, Mhm. right? It's working on the block level. Hmm. It is breaking this file in some blocks and storing the data on the disk. When next backup is comes, right? Let's suppose you have changed this file. You change something in this file, Mhm. right? But while like breaking this file in a block, and this block is the same, because so on the blocks is storing the data in a 0 and 1, Hmm. 0 and 1 this form. Just read out that like how the data is storing on the on this the on the disk, on the disk, right? So you will get to know like how so on the disk is storing the data in a 0 1 format, in the SCSI format, Mhm. right? In the SCSI format. So it's matching the data with the previous blocks, Mhm. correct? So that's why you will get the you will get the more space on your media server to store the data, because it's not the redundant data. We do not have the redundant data on the media server. Mhm. Or you can understand like this also. If so in one file you have the one number, the 10, correct? Now there is a file a.txt. In this file you just write the 10, correct? Once you take the backup, then it will then it will break this file in the blocks and store the data on the hard drive in the 0 1 form, Mhm. 0 1 form or 1 0, like this, right? Now someone has done the another entry 10 in the next line. Mhm. So if we are talking about at the file level, if we are talking about file level, so for incremental this file has been updated. Incremental this file is, if you are taking the incremental backup, then this file again will take the backup, Mhm. correct? But in the deduplication, in this line also 10, in this line also 10, correct? So if this file break, then it will not store again this line. Okay, it will just update its index records, because like the media server, this media server its own index, and it is updating only the index only. So actual data is no no transfer data. It, okay, it will Mhm. just update its index. Okay. You are saying that if we have one A file, in that file earlier entry was 10. Okay. Once backup taken, incremental backup taken, after that someone has changed data and in that file 10, correct? Correct. After taking incremental backup, it will change only index, it metadata about the No, data, no, no, correct? no, not incremental. हाँ एक्चुअली इन द इंक्रीमेंटल में तो वो इंक्रीमेंटल में तो बैकअप लेगा ही ना. इन द इंक्रीमेंटल इट विल टेक. हाँ Okay, actually we talk about that full backup and incremental. So हाँ whatever the changes after the full backup, it will cover हाँ in the incremental backup, correct? But in the correct deduplication, हाँ in deduplication, it will actually क्या होता है, in the deduplication we are not running the incremental backup. The first thing हाँ you remember this word.
if you are using the deduplication technology, you will not schedule the incremental backup, Okay. right? Yes. Okay, why? Because so it is, if logically you are understanding, this is also the incremental na. Actually, in this you are getting the full backup in terms of in cost of the incremental backup. Mhm. Krishna, right? You are getting, you schedule a one daily full backup, Correct. correct? Daily full backup. Hmm. Okay. So first day the size was, on Monday the size was the 10 GB, Mhm. and you schedule this deduplication. You Mhm. schedule deduplication in your job. Mhm. Now on a Tuesday, Mhm. okay, on a Tuesday, Tuesday also it's a full backup. Mhm. Tuesday also it's a full backup. But if you see in the job, the data transfer is nothing. Why? Because in this 10 GB, it's break the file in the block level. On the Tuesday Okay. also Because it's of it see, already has been taken that data. correct. Actually, so in the incremental, it is checking the file of the modified dates or the file change. But Mhm. in this duplication, it is checking the blocks. If we are getting the same blocks in the next backup also, then it will not storing your the data. So it will create a one more index with the previous one. ओके मुझे एक बताइए सर, अभी जैसे हमने पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक टेक्स्ट फाइल है ए, उसमें 1 to 10 एंट्री थी, करेक्ट? करेक्ट. टेक्स्ट फाइल ए में, उसके बाद मैंने सेम फाइल में 11 से 20 तक एंट्री कर दी सेम फाइल में, करेक्ट? करेक्ट. जब करेक्ट. 10 तक मेरा एंट्री हुई थी ना, तभी इंक्रीमेंट बैकअप रन हुआ था, करेक्ट? तो अनदर डे मैंने 11 से 20 तक उसी फाइल में एंट्री की थी. तो जब मैं इंक्रीमेंटल बैकअप सेकंड डे ले रहा हूँ, उस दिन क्या होगा? जो पूरा डेटा वो ले लेगा या सिर्फ वो 11 to 20 वही एंट्री ये कर देगा? नहीं नहीं, देखो अभी भी तुम समझे नहीं. देखो अभी भी नहीं समझे. ये दोनों के ना, इन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है. हाँ, ठीक है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट टोटली अलग है. देखो इंक्रीमेंटल जो क्या होता है, इंक्रीमेंटल जो फीचर है, ये बेसिकली तुम्हारा वर्क कर रहा है तुम्हारा फाइल लेवल पे. ठीक है, कोई भी फाइल है मेरा, लेट सपोज कोई भी फाइल है, वो फाइल का मैंने एक बार बैकअप ले लिया, उसके बाद उसमें कुछ चेंज हो रहा है, उस फाइल के अंदर कुछ भी हम कुछ भी रिकॉर्ड हम उसमें अपडेट कर रहे हैं, या कुछ भी फाइल हम उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, उस वाली फाइल के अंदर कुछ भी हम मतलब रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो इस फाइल के अंदर चेंज हो रहा है ना, और इसकी मॉडिफाइड डेट यहाँ चेंज हो जाएगी. इस फाइल की मॉडिफाइड डेट चेंज हो जाएगी. लेट मी शो यू हियर. देखो, let's suppose I have this file. क्या हो गया? देखो अभी मेरे पास ये फाइल है, करेक्ट? मीडिया आईडी दिख रहा है? हाँ. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में चेक करता हूँ. नाउ दिस फाइल इज क्रिएटेड ऑन दिस 28th of July. करेक्ट. ठीक है, at 12:49 PM. Okay, now I'm doing one thing. Okay.
media ID. Okay. Now I'm just copying this thing and pasting in the last and control S, save. Okay. I save this file now. Okay. Now I'm just checking the properties. Now you can see the created date is 28 July and the modified date is today's date. Correct. Correct. So Yes. actually the incremental backup works on this one. It checks the modified date. Okay. Right. The incremental backup check this modified date. Okay. In this file, the modified date has been changed. It means something is there. Like someone is update the record or someone is delete the some records. Right. So incremental backup काम करेगा इसके ऊपर. ये अब देखो अभी इसके अंदर क्या था, पहले इसका साइज कुछ और होगा. चलो अभी देखते हैं इसका साइज कितना है, 6.105. ठीक है, इसको फिर से ओपन करते हैं और इसको पूरा कॉपी पेस्ट दोबारा से कर देते हैं. अभी देखो 20 KB हो गया, पहले 8 KB था. करेक्ट, पहले क्या था 8 KB था. अब नाउ इट्स 20 KB. अब 20 KB, it means from 8 KB to अब the 20 KB, it means the 12 KB data has been changed, like 12 KB data has been added in this file. So incremental के अंदर ये क्या करेगा, incremental के अंदर it will take another 12 KB data, because in the full backup it was the 8 KB, but now it's a 20 KB, right? Yes. So we already have the 8 KB in the incremental, it will cover on the 20 KB. Okay, so this is the Yes. full and incremental technology work. Now we are coming to the deduplication. So deduplication क्या करेगा, it will break this file at the hardware level. It will not work on this one. This feature is the OS feature. You can check this file properties in the Windows only na, but like how this file is stored on the hard disk, you don't know. You don't know on the hard drive in which blocks or in which sector this file has been stored. So your deduplication technology works on that level. Your deduplication technology work on that level. It will break the files or store that files in the disk. Then it will match the current data with the previous or stored data. So that's why you are getting the more, you can see the increments or you can see the duplication chunks. Okay. I'll show you one more example. Let me wait. Show you how to store data on disk image. Right. Yes. So now we are talking about this one. If you Yes. see this example. Okay, we are not talking about that OS level. We are talking about this hardware level. How data is stored on the disk. Correct. So the deduplication technologies works at this level. Here also you can see. So this data is storing on the blocks and it's in a 0-1, the 10 or 0-1 format. Yes. Yes. Right. I'm just sharing this link.
Just try to copy image link. Just try to see this link. You will get the more idea like how the data is stored on the disk level. Okay, guys, Yes. are we clear? Yes, sir. Heman, Krishna? Yes, sir. अभी यार एक काम करना. So have you guys installed at VMware? So actually, if you not install, then no issue. Actually, I have created this this machine. So I'll created one more the Windows machine also. Then we'll see like the installation of master server and installation of the one client, right? Okay. And try to take the backup. Then in that, after installation, we'll cover that the storage, the disk storage unit, the topic. Okay. Okay. Right? Because that the storage unit topic is also like the boring topic. So I'll show you the practically. At the same time, we'll cover the like the theory also. Okay. Okay. Right. So if you are like if you're able to install like this VMware, or if you're able to create one more machine, it's fine. Otherwise, we will actually I have like already created machine, and I have they download the setup also. So I'll show you how. Okay, today let me show you. Let me first stop the recording. Then I'll show you how to the download the softwares.